اللہ सही kitosay जदा chamkya ishq aguha'an तर्जुमा। इस मिसरे में हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की ज़ात को उस वक़्त पहचान पाया जब इश्क दिल और जान के अंदर चमका। तशरीह। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अल्लाह सही की तो कहकर अल्लाह अज़्ज़ व जल के उस ज़िक्र के बारे में बयान कर रहे हैं जो अल्लाह अज़्ज़ व जल की मार्फत में परवाज़ देता है। वो ज़िक्र तसव्वुर इसम अल्लाह ज़ात है। आप रहमतुल्लाह फरमाते हैं जब तालिब सच्चे दिल से इसम अल्लाह ज़ात के तसव्वुर को अपने अंदर उजागर करता है तब दिन रात अल्लाहू और इसम अल्लाह ज़ात की मश्क से तालिब के वजूद में इश्क एक नूर बनकर चमकने लग जाता है और इसम अल्लाह ज़ात का तसव्वुर अल्लाह अज़्ज़ व जल की जानिब मंजिल बा मंजिल आगे लेता जाता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत, नमाज, रोज़ा और बाकी अरकान के साथ साथ तसव्वुर इसम अल्लाह ज़ात भी अल्लाह अज़्ज़ व जल की पहचान व मार्फत हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी चीज़ की पहचान का सबसे उम्दा और आला ज़रिया आँख और बिसारत है, जबकि देखने से किसी भी चीज़ की पूरी पहचान हो जाया करती है। इसलिए आँख से किया जाने वाला तसव्वुर और पासे अनफास से किया जाने वाला ज़िक्र सबसे आला और अफजल है। सिर्फ यही ज़रिया मार्फत और वसीला दीदार इलाही है। कुरान पाक से हवाला। वज़्कुर इस्म रब्बिक वतबत्तल इलैहि तबतीला। तर्जुमा। और अपने रब का नाम याद करो और सबसे टूट कर उसी के हो रहो। इस आयत में अल्लाह अज़्ज़ व जल के नाम का जिक्र करने का हुक्म दिया गया है, यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल के सफ़ाती नामों का जिक्र करो, और साथ ही सबसे टूट कर जिक्र करने का भी हुक्म दिया गया है, यानी सबसे टूट कर उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाओ। मुतवज्जा होने से मुराद कल्ब व ज़हन से हर शय का ख्याल निकाल कर सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ व जल के ज़िक्र पर तवज्जो देना है, और तवज्जो देने का ज़रिया इसम अल्लाह ज़ात है जिससे आँखों के ज़रिए दिल में बसाना है। इससे तसव्वुर से बातन में दिल ज़िंदा और बेदार होता है और इस तरह इंसान की बातनी आँख खुल जाती है जिससे अनवार बसीरत हासिल हो जाती है जो अल्लाह अज़्ज़ व जल की पहचान और मार्फत हासिल करने का ज़रिया है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह फरमाते हैं हर कुफल की एक कुंजी होती है और इंसान के बातनी वजूद की कुंजी तसव्वुर इसम अल्लाह ज़ात है। जो शख्स वजूद का कुफल खोल कर कल्ब सलीम का ख़जाना हासिल करना चाहता है तो तसव्वुर इसम अल्लाह ज़ात से ऐसा करे। तसव्वुर इसम अल्लाह ज़ात से दिल में अनवार दीदार पैदा हो जाते हैं, जबकि ज़िक्र फ़िक्र विर्द व वज़ाइफ से रजुआते खल्क पैदा होती है जिससे नफ्स मोटा और मगरूर होता है। राते दे हाँ देवे ताखीरे नत करे अगोहाँ सौहाहू। तर्जुमा। इस मिसरे में सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इश्क हकीकी ने मेरे अंदर दिन रात तेज़ तर तपिश दे रखी है और रोज़ बरोज़ मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल की ज़ात से वाकिफ़ हो रहा हूँ। तशरीह। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ज़िक्र इसम अल्लाह ज़ात का तसव्वुर मेरे वजूद में दिन रात मुनव्वर हो रहा है और इसकी मश्क मुझे अल्लाह अज़्ज़ व जल के जानिब रोज़ा बरोज़ उड़ाई ले जा रही है। आप रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि तालिब हक़ अपने दिल को इसम अल्लाह ज़ात से बेदार कर, जब तक दिल बेदार ना हो मार्फत और फ़क्र की मंजिल पा नहीं सकता। फिर आप रहमतुल्लाह फरमाते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल का कुर्ब तो शहरक से भी ज़्यादा नज़दीक है, तो उसका जमाल चश्म बातिन की नाबिना होने के बाइस नहीं देख सकता। कुरान पाक से हवाला। वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। तर्जुमा। और हम दिल की रग से भी उससे ज़्यादा नज़दीक हैं। अल्लामा अली बिन मोहम्मद हाज़न रहमतुल्लाह फरमाते हैं वारीद वो रग है जिससे खून जारी होकर बदन के हर जुज़ में पहुंचता है। यह रग गर्दन में है और आयत के मानी ये हैं कि इंसान के अज्ज़ा एक दूसरे से पर्दे में हैं, मगर अल्लाह अज़्ज़ व जल से कोई चीज़ पर्दे में नहीं। शाहरग इंसान के वजूद में दिल के मेन मॉल से खून लेती है और सारे वजूद में पंप करती है। सुबहान अल्लाह। जब तालिब हक़ इसम अल्लाह ज़ात का तसव्वुर अपनी ज़ुबान से पढ़ता है तो वो आँखों से उसके दिल पे उतरता है और इसम अल्लाह ज़ात के ज़िक्र के रमूज़ व बरक़ात उसके वजूद में फैल जाते हैं। इसम अल्लाह ज़ात का तसव्वुर एक पल में दिल, दमाग, ज़बान और नज़र से होता है। अल्लाह के सिलसिला सरवरी क़ादरी में तालिब हक़ को अता किया जाता है, जो अब फैज़ान नज़र से औलाद पाक हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अता कर रहे हैं।
جس میں حضرت محمد اکبر امیر افضل کے صاحبزادے چند سلطان امیر افضل سے سینہ بسینہ حضرت قمر سلطان امیر افضل دامت برکاتہ میں عالیہ اور ان کے صاحبزادے عامر سلطان امیر افضل بھی عطا فرما رہے ہیں۔ اندر بھائیں اندر بالن اندر دے وچ دھواں ہو۔ ترجمہ: اس مصرعے میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اب میری یہ کیفیت ہے کہ میرے دل کے اندر ہی عشق کا شعلہ بھی ہے، ایندھن بھی اور دھواں بھی ہے۔ تشریح: حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ذکر اسم اللہ ذات کا تصور کرنے سے میرے اندر عشق الہی کی وہ آگ جل اٹھی ہے کہ اب میں دن رات اس عشق کی آگ میں جل رہا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں عشق الہی میں جل جل کر اب یہ حال ہے کہ میرا وجود لکڑی کی مانند اللہ عز و جل کے حضور کھڑا ہے، ساکن جسے کوئی ہوش نہیں، اور میری سانس دھواں بن گئی ہے اور نفس راکھ ہو چکا ہے۔ تجلیات الہی کسی ایک حد پر نہیں ٹھہر جاتے، اسی طرح علم بھی عارفین کے پاس ختم نہیں ہوتا بلکہ درجہ بدرجہ بڑھتا جاتا ہے۔ شارک تھیں رب نیڑے باہو، عشق کے تو سے سوہنا ہو۔ ترجمہ: اس مصرعے میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ عز و جل کو تب ہی پایا جب میں عشق کی ہر منزل سے پار ہو گیا۔ جب انسان اللہ عز و جل کے عشق و محبت میں چلتا ہے تو شیطان اپنی چالاکی اور مکاری سے اس کے ایمان و علم کو سلب کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اس راہ پہ قدم قدم پہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنا پڑتا ہے اور اپنے نفس سے جہاد کرنا پڑتا ہے۔ اس منزل پہ شریعت و طریقت سے گزر کر چلتے ہیں۔ ہر کوئی فقر کی منزل کا طالب نہیں ہوتا، بس سب شریعت و طریقت پہ ٹھہر جاتے ہیں اور اس کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں، جبکہ اللہ عز و جل نے انسان کی تخلیق اپنی پہچان اور عشق کے لیے کی۔ آپ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے شریعت و طریقت پہ عمل کرتے ہوئے فقر کی منزلیں طے کی اور قرب الہی پایا۔ اللہ صحیح kitosay جدھاں chamkya ishq aguha'an ho. Translation: In this stanza, Hazrat Sultan Bahoo Rahmatullah alayhi says that I came to know the essence of Allah Azza wa Jal when love shone in my heart and soul. Explanation: by saying sahi kito, Hazrat Sultan Bahoo Rahmatullah alayhi is describing about that zikr of Allah Azza wa Jal which gives flight in the recognition of Allah Azza wa Jal. That zikr is vein of Ism Allah Zat. He Rahmatullah alayhi says, when the seeker sincerely inculcates the vein of Ism Zat within himself, love starts to shine as a light in the existence of seeker due to the day and night practice of Allahu and Ism Zat, and the vein of Ism Allah Zat takes him forward towards Allah Azza wa Jal face by face. Worshipping Allah Azza wa Jal along with prayer, fasting and rest of the pillars of zikr, the vein of Ism Allah Zat is also very important to gain knowledge and recognition of Allah Azza wa Jal. The best and highest means of recognizing anything is the eye and vein, whereas by seeing one gets the complete recognition of anything. Therefore, the realization done by the eye and zikr done by the breath is the highest and prime. This alone is the source of recognition and the means of Didar-e Ilahi. Reference from the Holy Quran. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. Translation: and remember the name of your Lord, and separating from everyone else, devote yourself solely to Him. In this verse, it is ordered to zikr the name of Allah Azza wa Jal, means do zikr the attributes of Allah Azza wa Jal, and at the same time it has been ordered to mention them separately. That is, break away from everything and turn your attention to Him. Focusing means removing the thought of everything from your heart and mind and focusing only on the remembrance of Allah Azza wa Jal, and the source of heat is Ism Allah Zat, which is placed in the heart through the eyes. With this vision, the heart inwardly becomes alive and awake, and in this way the inner eye of man is opened, through which he receives the light of inside, which is the means of gaining knowledge and recognition of Allah Azza wa Jal. Hazrat Sultan Bahoo Rahmatullah alayhi says, every lock has a key, and the key to the inner being of man is the vein of Ism Allah Zat,
Whoever wants to open the lock of existence and obtain the treasure of the righteous heart should do so by the vein of Ism al-Azad. The light of vein is born in the heart from the conception of Ism al-Azad, while the zikr, thoughts, recitation and religious brooding leads to Rajuat-e Khalq, by which the self becomes fat and proud. Rati dehan deve ta takhere, nit kare aguha soha hu. Translation. In this stanza, Hazrat Sultan Bahoo Rahmatullah Alayhi says, "True love has kept me burning faster day and night, and day by day I am getting to know the essence of Allah Azza wa Jal." Explanation. Hazrat Sultan Bahoo Rahmatullah Alayhi says, "The vein of Zikr Ism al-Azad is shining in my being day and night, and its practice is taking me towards Allah Azza wa Jal day by day." He Rahmatullah Alayhi says, "O seeker of truth, awaken your heart with the name of Allah, as you cannot reach the destination of recognition and faqr until your heart is awakened." Then he Rahmatullah Alayhi says, "The nearness of Allah Azza wa Jal is closer than the altar, so His beauty cannot be seen due to the blindness of the inner eye." Reference from the Holy Quran. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Translation. And we are nearer to him than his jugular vein. Allama Ali bin Muhammad Khazan Rahmatullah Alayhi says, "Warid is a vein that carries blood to every part of the body. This vein is in the neck, and the meaning of the verse is that the parts of man are hidden from each other, but nothing is hidden from Allah." Aorta takes blood from the main valve of the heart in the human body and pumps it throughout the body. Subhanallah. When the seeker of truth recites Ism al-Azad with vein and his tongue, it goes down to his heart through eyes, and the blessings of the seeker of Ism Allah spread in his existence. The vein of Ism Allah is conceived in one moment by the heart, mind, tongue and sight. Ism al-Azad is being given to the seeker of right in the chain of Salvari Qadri of Hazrat Sultan Bahoo Rahmatullah Alayhi, which is now being granted by the grace of the children of Hazrat Sultan Bahoo Rahmatullah Alayhi. From respected Ma'ab Hazrat Muhammad Akbar Amir Afzal to his son Sahibzada Chand Sultan Amir Afzal, and from his Sina Basina to Hazrat Qamar Sultan Amir Afzal Damate Barakatam, and his son Sahibzada Amir Sultan Amir Afzal is also giving to the people. Andar bhahe andar balan, andar de vich dhuha hu. Translation. In this stanza, Hazrat Sultan Bahoo Rahmatullah Alayhi says that, "Now I'm in this state that love is also a blaze within my heart. It is also a fuel and also a smoke." Explanation. Hazrat Sultan Bahoo Rahmatullah Alayhi says that, by the conception of Ism al-Azad, the fire of divine love has been ignited in me, that now I am burning day and night in the fire of that love. Further, he Rahmatullah Alayhi says, by keep burning in the love of Allah, now the situation is that my existence is standing in the huzur of Allah Azza wa Jal like a wood, still as if there is no other consciousness, and my breath has become a smoke, and my nerves has turned to ashes. Divine manifestations do not stop at any one limit. Similarly, knowledge does not end with the sages, but increases step by step. Sharakti rab nere bahu, ishq kitosay sona hu. Translation. In this stanza, Hazrat Sultan Bahoo Rahmatullah Alayhi says, "I found Allah Azza wa Jal only when I crossed every stage of love." Explanation. In this stanza, Hazrat Sultan Bahoo Rahmatullah Alayhi says that, "I did not receive the love of Allah Azza wa Jal just like that, but I adopted the path of Faqr." Sayyidina Ghawsul Azam Raziyallahu Anha has written in his vital composition Risalatul Ghawsiyah that Allah said, "O Ghawsul Azam Raziyallahu Anha, tell your companions and friends that whoever among you wants my association should adopt Faqr. At the destination of Faqr, all kinds of worldly desires and honor and humiliation end in the love of Allah,
and man becomes unconcerned from both worlds in the companionship of Allah. Faqr is a pure emotion which is not the legacy of any individual or group. When a person walks in the ishq of Allah Azawajal, Shaitan starts to diverse his faith and knowledge with his cleverness and insidiousness. On this path, one has to take account of himself on every single step and has to fight against himself. On this journey, one has to walk through the passage of Sharia and Tariqat. Not everyone seeks the destination of Faqr. Everyone just stays on Sharia and Tariqat and makes it their goal, whereas Allah Azawajal created man for his recognition and love. He Rahmatullah alayhi says, by following Sharia and Tariqat, I crossed the phases of Faqr and found Qurbe Ilahi.